हेलो लर्नर्स आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल मो स्कूल एक्टिविटी को आज ई वीडियो माध्यम रे आपण मानक जणाबी जे नाउन संपर्क रे तो आसन तो देखिबा जे कोन रहिछि लेसन रो एजेंडा रहिछि एई वीडियो रे आमे माने देखिबा जे मोटिवेशनल एक्टिविटी नाउन कोन जानिबा सिंगुलर नाउन्स कोन प्लुरल नाउन्स कोन और प्रैक्टिस एक्टिविटी मध्ये आपण मानक सामने मो करिया को जाउछि तो आसन तो देखिबा lesson objectives रे रहिछि हमर define the meaning of a noun हमें noun को define करिबा provide various examples of nouns according to the categories हमें कैटेगरी के अनुसार मध्य ताको विभक्तिकरण करिबा आउ किछि रूल्स जानिबा टू क्रिएट द प्लुरल फॉर्म्स ऑफ ए nouns तो ए तीनोटी जिनिस ऊपर आज हम विशेष कर आलोचना करिबा तो सर्वप्रथम लेट्स टेक ऑफ Can you name all the images in the boxes? देखंतु आपण एटी देखि परथि भिन्न भिन्न प्रकार रा चित्र एटी करा जायछि निश्चित भाव रे जानि परथिबे ये वीडियो कैमरा ये स्टिल कैमरा ये रॉकेट ये गोटे जंदा पे पड़ी जा आपण कहि परबे बर्गर अछि पिलाटी अछि तो अनेक जिंस ए सब जिंस को हमें देखुछे जानछे करछे एवं एई पर भाव रे जदि हम देखिबा तो आसंतु जानिबा नाउन कोन और नाउन संपर्क रे सविशेष आलोचना आज हम एई वीडियो रे करबा डेफिनेशन और एग्जांपल दबा डेफिनेशन कोन नाउन रो ए नाउन इज ए वर्ड that names a person, a place, an animal, a thing or an idea. The definition कोन रहिला नाउन रो नाउन इज ए वर्ड ये गोटे शब्द that means a person भी ही परिबो प्लेस रो नाम भी परिबो an animal भी ही परिबो a thing भी ही परिबो और an idea भी ही परिबो तो पर्सन ने हमें कोन नबा एग्जांपल्स नबा ताले हमें देखिबा जे पर्सन कहले आपनकर सिस्टर ही परिबे ब्रदर ही परिबे लॉयर क्लासमेट विक्टोरिया किछि भी ही परिबो अपन जा कहबे तो पर्सन हिसाब से देखि कहबे पड़ो जा कहबे सब दिन तो प्लेस अलाउ फिलीपींस गोटे जगह ना इंडिया भी हमें कहि परिबा सिटी मध्य कहि परिबा बाथरूम स्कूल whatever it may be निश्चित भाव रे प्लेस जे कोनसे प्लेस रो नाम मते आपण नाम कहि परिबे एनिमल को ना दे परिबे डॉग हे पारे टर्टल हे पारे काट हे पारे बार्ड हे पारे किछि भी पारे सेम थिंग कोन जे कोनसे जिनिस को आपण मते नाउन ना दे परिबे जेमति कि पेंसिल पाई सेल फोन पेन क्लाउड एटसेट्रा आपण जाके करबे आईडिया कोन जस्टिस गोटे आईडिया ऑफ फ्रीडम लव सेंचुरी ये गोटे आईडिया मते आपण करि परिबे तो एही प्रकार आपण भिन्न भिन्न एग्जांपल देई परिबे और अनेक जिनिस किंतु मु एतिका आपण माने करिया कुछ तो आसन को जीव आगु तो सर्वप्रथम हमें जानिबा ए नाउन सिंगुलर भी ही परिबो प्लुरल भी ही परिबो जेमिति कि चित्र रे देखुछन आपण ये बही अछि एठी केते गुडियो बही सहित आपुल अछि सेमति किछ नै चित्र रे अछि तो गोटिए बही सहित अनेक गुडिए बही केटी देखा जाछि तो नाउन कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लुरल depending on whether they refer to a single or more than one person or place ही परिबो थिंग्स ही परिबो और कांसेप्ट ही परिबो तो किछि भी परिबो किंतु सिंगल ले भी ही परिबो प्लुरल ले भी ही परिबो तो रूल कोन कोन छी ए सब जिंस को देखिया पाई केतबे सिंगुलर रे कोन रहइबो एवं प्लुरल हेले सेटा कोन हिजबो द प्लुरलाइज्ड रेगुलर नाउन्स आर s to the end हमें बेले बेले भिन्न भिन्न सूत्र देखिबा रूल हमें देखिबा 1 2 3 4 रूल देखिबा कोठी गोटे सिंगल कैमरा रे हमरो कैमरा रही छी तो कैमरास खाली सिंपल एस टे लागिछ देखो to pluralize regular nouns add s to the end ता माने कैमरा अछि कैमरास रहला तो गोटे कप अछि वन कप देन 3 कप्स चित्र रे देखुछन 3 कप्स खाली s ओनली s लागुछि जदी हमें रूल नंबर 2 को जिबा ताल देखिबा एठी हमें गोटे सिंगुलर शब्द को
वर्ड को आम जो प्लूराल करवा से ईएस लगेगा ईएस देखो ये बॉक्स टी अच्छी ओपन बॉक्स तो एटी दीटा बॉक्स अच्छी तो टू बॉक्सेस हम ये ईएस लगे तो अगर से सूत्र कौन कहूँ add es to the end of a singular noun that ends in s, ss, sh, ch, x or z किछि भी थिबो जदि से माने वर्ड रो शेष रे आपण एस थिले परबो डबल एस थिले परबो एसएस थिले सीएच थिले एक्स थिले आउ जेड थिले जदि एमती किछि लेटर रहुची ताले निश्चित भाबरे आपण ताको ईएस लिखिबा पई पड़िबो तो शब्द तो अनेक अच्छी तो आपण माने चिंता करन तो आपण दे जो वन बॉक्स वन बॉस बॉस हेले बॉसेस होची बॉक्स हेले बॉक्सेस होची तो देखि परले तो देखो रूल नंबर 3 को जीवा इफ अ सिंगुलर नाउन एड्स इन y and the letter before the y is a consonant change the ending to ies तो एई जोडे कथा जी जदी गोटे नाउन रो एंड रे y थिबो and the letter before y is a consonant एवं y पूर्वरु जो लेटर थिबो consonant थिबो consonant माने आपनकर जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तो consonants आउ vowels कहउछंती ओ ए ई आई ओ यू को छाड़ देला पर आ सब रे consonants 26 लेटर रो तो एटी p अछि तो पीज हबो आई ई एस लागिबो बुझी परले change the ending to ies to make the noun plural तो plural करबा बेले हमें y पूर्व रे consonant अछि लेटर ताले से स्टेटर रे हमें ies लगेबा सेमति वन भुनी एठी मध्ये एक्जेक्टली n अछि n गोटे consonant लेटर सो एटी टू भुनीज हैला भुनीज ies हैला बुझी परले ओके देन नेक्स्ट द रूल नंबर 4 कहउची add es the singular noun if it ends in a o जतले ओ थी बॉसेस गोटे शब्द जेमति कि टमाटो जेमति कि भलकानो से तबले भलकानोज हे जिवो एवं टमाटोज हे जिवो तो सूत्र कोन मन रखले add es to the singular noun if it ends in o to make it plural okay then next rule number 5 कहउची some nouns undergo no modifications when they are pluralized बेले बेले किछि शब्द एंती अछि जोति कि हमको प्लुरल कले जहा सिंगुलर रे मध्य सेया तो इटा निश्चित भाव रे गोटे इंपोर्टेंट जिंस तो आपण देखंतु 1 शिप 2 शिप शिप किछि चेंज हला तो सेमति डियर तो डियर्स भी हबन माने डियर माने गोटा हरिण ना हरिण दुटा हरिण आइले हरिणस डियर्स लिखावनी शिप सेमति शिप्स लिखावनी only sheep is important. The next rule number 6 irregular nouns follow no specific rules. किछि किछि एमती शब्द अछंती एमती नाउन अछंती ताको irregular nouns बोली कहचे जेमति कि माउस आपण देखछंती माउस रो टू माइस हे जाउची चाइल्ड रो टू चिल्ड्रन हे जाउची तो ये सब क्षेत्र रे मैन मेन हे जाउची ये सब क्षेत्र रे आमे कोन करबा इरेगुलर नाउन्स रे को कहबा फॉलो नो स्पेसिफिक रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज रे एमती रूल्स आसीबो जो रूल्स गुडी को केते बळे ठीक ठीक चलतिबो तो केते बळे एक्सेप्शनल आसीबो तो आमे सेही अनुसार एक्सेप्शनल केसेस गुडी को अंडरस्टैंड करबा ताको देखिबा जानिबा एवं बुझिबा जे प्रकृत रे ई सब जिंस गुडी का केमति थिला तापरे नेक्स्ट वन आसीबा तो वर्तमान टाइम ही लेट्स प्रैक्टिस तो आमे देखिले गर्ल मु आपण मानको किछि प्लुरल फॉर्म तयारी करिया पई नाउन रो देउछि आपण मन निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जे एटा कोन हबो जदि बुझा पड़ुनी तो निश्चित भाव रे गर्ल सिंपल अछि तो कोन हबो बुक के अछि एटी कोन केस आसी बाटी ओर केस आस्तिला हमर मन पकान सब केस अछि शिफ्ट खाली सिंपल शिफ्ट हबो तो एक्टिविटी कोन हो निश्चित भाव रे करंतु परवर्ती अवस्था को जीवा वर्तमान जदि आपण मानकर किछ क्वेश्चन अछि तो कमेंट बॉक्स रे लिख पारिबे मु आपण माननकु क्वेश्चन आंसर करबा चेष्टा करिबे थैंक यू फॉर लिसनिंग
पुणी देखा एक सुंदर भिडियो से।